Hello and welcome to the 6th day of our 10-day program. This is Sudhansu Tripathy welcoming all of you for this 10-day foundation chemistry program for class 11 beginners. And today is the 6th day. Welcome, Swam. Sir, namaskar. So, did you get some time? Kichi problem kari parlo ki? Swam? Aଜ୍ଞା sir କରିଛି sir ସବୁ କରିନି ସବୁ ତ ବହୁତ ଦେଇଥିଲି ମୁଁ ସବୁ ତ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ କୋଉଥିରୁ କରିଛ sir ଯୋଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ PDF ଥିଲା sir ସେଥିରୁ କରିଛି ଆଉ sir ଯୋଉ ଡେନ୍ସିଟି ଯୋଉ sir ସେଇ PDF ରୁ କରିଛି वेलकम वैभव से डेंसिटी जो एवरेज डेंसिटी करिया कथा सेटा करछ आउ sir ଆଉ ଯୋଉ ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ମୋଲ୍ କନସେପ୍ଟ sir ସେଥିରୁ ओ एलिमेंटरी मोल कांसेप्ट हमें रिवाइज करथिबो तापर एलिमेंटरी तो आगु हमें करथिले नुहे ଆଜ୍ଞା ताकु टी रिवीजन करियो की इच्छा हला ठीक अछि आ बायोजा तमे किछि करथिलो की ଆଜ୍ଞା ସାର୍ कोथुरु ସାର୍ ସେ ଯୋଉ ଭେପର ଡେନ୍ସିଟି ମାନେ ଯୋଉ ପିଡିଏଫ ଟା ସେଠୁ କରିଥିଲେ ଆଉ ଯୋଉ ଆଟମିକ ଇଏଟା ଦିଆ ହେଇଥିଲା ସେଠୁ କରିଥିଲେ एटॉमिक मास आइसोटोप सेटा करथिलो आउ सेति ଆଜ୍ଞା ओके नो प्रॉब्लम आउ की करथिलो वैभव आशुतोष share my screen किसी डाउट अछि की आयोजा ଆଜ୍ଞା ସାର୍ कोथुरु एटॉमिक मास ना एवरेज कांसेप्ट ସାର୍ ଆଟମିକ ମାସରୁ ମୁଁ ଦେଖଉଛି କୋଉଠି କେତେ ନମ୍ବର ସେଇଟା ଏଇଟା ମୁଁ ତ ପଢିନି ତ ସେ ରିଲେଟେड ଜିନିଷ ମୁଁ ଡୁଲଙ୍ଗ ଏଣ୍ଡ ପେଟିଟ୍ସ ଲ ତାକୁ ଉଠି ଗଲାଣି ସେ ଆଜିକାଲି କୋର୍ସ ରେ ବି ନାହିଁ ସେଟା ବହୁତ ଅବସୋଲିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ଲ ଅଫ ଆଇସୋମର୍ଫିଜମ ମଧ୍ୟ ପଢା ଯାଉନି ବଟ୍ ଏଇଟା ଅଟୋମେଟିକାଲି ଆମର ଷ୍ଟୋଇକିଓମେଟ୍ରି ରେ ଆସିବ ସୋ ନଥିଙ୍ଗ ତମେ କୋଉଟା ତମର ଡାଉଟ୍ ଅଛି କୁହ କୋଉଟା ଅଛି ନା ସାର୍ ଏଟା ନୁହେଁ ଆର ପିଡିଏଫ ଟା ଅ ସାର୍ ତାର ଯୋଉ 9, 10 ଆଉ 8 ନମ୍ବର ହେଇନ କୋଉଟା ଆରି ଏଇଟା ନା ନା ଆରଟାର ଓ ତାମାନେ ଡେନ୍ସିଟି ଭେପର ଡେନ୍ସିଟି ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଓକେ ସୋ এইটা তার ଯୋଉଡାକ ୱାର୍କଆଉଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଗୁଡାକ ଦେଖି ଦେଇଛ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଦେଖିଥିଲୁ କେତେ ନମ୍ବର ସାର୍ 9, 10, 8 ସାର୍ ବୁଝା ହିଁ ପଡିଲାନି 9 10 8 ଆଜ୍ଞା ସାର୍ 8 9 10 ତାମାନେ ନା ଆଜ୍ଞା ଓକେ ୱିଲ୍ ଡୁ ଦ୍ୟାଟ୍ କରିଛ ଫେଲ ମାରିଛ ମାନେ ତାକୁ ଆମେ କରିବା ନ କରିଛ ନ ଦେଖିଛ ଆମେ ସେମିତିଆ ଜିନିଷ କରିବାନି ଦେଖିଛ ଜାଣିପାରିଲନି ଆମେ କରିବା ନିଶ୍ଚୟ କରିବା The problem goes like this. The density of a sample of ozonized oxygen. Ozonized oxygen means, guys, ozonized oxygen means is a mixture of oxygen and ozone.
When ozone is prepared from oxygen by a silent electric discharge, you will know later, then about maximum 20% of oxygen is converted to ozone and remaining 80% remains as unreacted oxygen. So that mixture is called ozonized oxygen. Was found to be तार average density से देखिए average density 1.5 gram per liter. When 100 ml of this gas was, oh yeah, this knowledge is required. Turpentine oil, pine oil किंवा turpentine oil absorbs only ozone. Ozone और अन्य गैस थी वो ऑक्सीजन नाइट्रोजन थी वो टर्पेंटाइन ऑयल ओजोन को खाई जीव जेमती अल्कालाइन सॉल्यूशन ऑफ गुटे अछि पायरोगैलोल सेटा ऑक्सीजन को नहीं जीव सिलेक्टिवली अन्य गैस मान को छाड़ दबो सेमती टर्पेंटाइन ऑयल केवल ओजोन को खाई जीव. So when 100 ml of this mixture at STP was treated with turpentine oil, the volume was reduced to 90 ml. तामाने केते ml ओजोन थिला तामाने केते ml ओजोन थिला ये को स्वयं केते थिला सर 10 ml 10 ml because 100 ml थिला ए ऑक्सीजन ओजोन रो मिक्सचर थिला ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन 100 ml से जेतेबेले पास करा हला टर्पेंटाइन ऑयल द वॉल्यूम वाज रिड्यूस्ड टू 90 ml 100 टा 90 गेला ताल 10 ml वाला कुआडे टेम्परेचर एंड प्रेशर रिमेनिंग सेम हमें पढ़ी छे इवन प्रिंसिपल the volume is directly proportional to the number of moles or number of molecules. So 10 ml टा कोन पायो जा सर दीटा मिसी के तुम सकाळु रातिरु भांग खाइछ सकाळु तुमर भांग इफेक्ट जाइनी ओजोन ओजोन को केवल टर्पेंटाइन ऑयल खाई जाए एब्जॉर्ब करनी तो गैस मिक्सचर टाको टर्पेंटाइन ऑयल पर बबलिंग करी बाहर कर देले ओजोन ता भितरे पसी गल जति की वॉल्यूम रो ओजोन थिबो से नाही दैट इज आउट टर्पेंटाइन ऑयल भितरे पसी जाय तो बाकी जो हैला सेटा 90 ml रहिला ताले जो गला 100 ml रु 10 ml चली गला सेटा कोन पई चली गला कहार वॉल्यूम सेटा पायो जा सर एटा ओजोन रो ताले तेणु वॉल्यूम ऑफ ओजोन हैला वॉल्यूम ऑफ ओजोन हैला 100 थिला ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन ओजोन ऑक्सीजन रो मिक्सचर वर्तमान अछि 90 केवल प्योर ऑक्सीजन -90 सो 10 ml जो नहीं गला किए ना टर्पेंटाइन ऑयल सेटा हो ओजोन रो वॉल्यूम बस अल्ला वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू मोल्स तेबे हमें बाहर कर दवा कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ ओजोन ओजोन को धर हमें जानि ने फार्मूला भी जानि ने हमें सेटा लिखि देले एटा हमें जानि ने मन करो OX ओजोन कर फार्मूला में O3 भी जानि ने कि किछि जानि ने खाली मोलर मास बाहर करबा ठीक अछि हमें परसेंटेज जणा पड़ला आर होची 90 into 32 plus 10 into x why we do not know the molar mass of ozone as if by 100 এটা अच्छा डेंसिटी पूरा से डेंसिटी देई एब्सोल्यूट डेंसिटी ओ माय गॉड तेणु हमको बाहर करिया पड़िबो ओ ओ तो हमको बाहर करिया पड़िबो डेंसिटी कारण डेंसिटी देइछि एसटीपी रे के कहि परिबो ऑक्सीजन रो डेंसिटी केते सर 22.4 22.4 कौन लीटर हाँ एसटीपी रे डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन केते के कहि परिबो यस के कहि परिबो very unfortunate
Bismay କହିଲ? Sir, 1.42 gram per liter. କେମିତି ଜାଣିଲ କଣ ପାଇଁ କଣ କେମିତି କଲ କେମିତି? ହଁ? ହଁ? କେମିତି Sir. କଲ? Yes, Devans. Now I request all of you to stick to time. I really detest and do not appreciate those who join classes or meetings even 1 minute late, even few seconds late. Oh well, in some occasion, everyone can be delayed for some very unknown reason. I mean, invited reasons. You are delayed. That is understandable. But we have a habit of joining late to any meeting. I fail to understand after having known that this person sticks to time. Even then, if you join late, then this will be almost an embarrassment. I don't say humiliation, embarrassment to the teacher who is going out of the way to help you. Oh yeah, yes. I do not disagree that you had some of you had some network problem, some other. Sometimes we take a pretext, a plea to evade the truth, to evade the truth. That we should not indulge in such a thing. Let us be honest. And if at all we are delayed for some reason, some flimsy reason, not a serious reason, then we do not we will not repeat it in future. So yes, the ones. Sir, mass by volume, so 32 by 22.4, 320 by 224. Precisely. If molar volume at STP is 22.4 liter, is the molar volume. Its mass is 32. So density is mass by volume. So 32 gram at STP will have a volume equal to 22.4. So that is the density of oxygen. It is coming how much? Sir, 1.43. You have explained to me how you calculated the density. I might think that you have just Googled Sir, today you can on your fingertip you can get answer of majority of questions. sir, hand raise करतील बरं. This the gram per liter. This is the unit. So if you keep this, as such, don't calculate 32 by 22.4. And density of ozone will be how much? Ozone, supposing you do not know its molar mass, X by 22.4. Why I'm saying because 22.4 factor will be a common. That will be common. We can use it at the end. So the percentage is known. I mean, the mole is known. The volume is proportional to mole. 90 into 32 by 22.4. That is the absolute density of oxygen at STP plus 10 into X by 22.4. And that, of course, by 100 is equal to the density is given. So, what is the average molar mass that X by 22.4? So Y by 22.4 is equal to the density, that average density given at STP is 1.5. So can you multiply 1.5 with 22.4 to get the value of Y, the average molar mass?
What is that? The average molar mass of the mixture is, say, Y by the molar volume is 22.4, that is given to be 1.5. कहते स्वयं कहते ହେଲା 33.6 एते समय लाଗୁଛି 33.6 ଆଜ୍ଞା ସାର୍ by 22.4. Why I keep 22.4? Because that will be cancelled out, or you would have done in any way you like. So here we 90 into 32 by 22.4 plus 10 into x by 22.4 is equal to 33.6 by 22.4 into 100. This 100 goes here. Then 22.4 gets cancelled. And we have 90 into 32 plus 10x is equal to 3360. So you can calculate what is, this is so we got the exact answer 48. That means if it is made up of only one element, oxygen, its formula is O3. It's not asking its formula, it's asking its molar mass. You got it? You could have also converted to density, then you would have got the density. Then you would have multiplied by 22.4 to get the molar mass. Not the same thing. Got it? Understood? Welcome those who are watching from the YouTube directly now in the early mornings. Not early morning, it is about to be 7, and the weather is a little unpredictable as per the Met department. There might be a torrential rain, a cyclonic storm, but let's see what happens today. You understood? Raise your hands, please. Ms. Payoza, you raise this question. Who else? Chinmaita? Asutosh? Ayushman? Okay, we'll take the next question without a delay because we have to go a long way. This is a big problem which is very scary. It looks very scary, intimidating. Once you find a particular problem, question is of such a vast volume, I mean, area, maybe half of a page or full page, then you are first intimidated, scared. But you know, there is a Hindi very popular saying, डरना मना है क्योंकि डर के आगे क्या है? जीत है. डर के आगे जीत है, डरना मना है. तो ये भी हम करेंगे. I understand. काली एते गुड़ाक मु देई देली. Looking to the bulk, you got intimidated. And might be you are taking the pretext of having loss of electricity. I am talking to Master Chinmay. Might be. Because the daytime electricity is not required. Only in the evening time, night time electricity is there. And I know those whose children study in the high school level, they have an alternative light system, inverter system, or some inverter light system for their children to study, not to suffer due to power cut. Because
Nowadays, the frequency is less, but in summer, in earlier times, the power cut was really catastrophic. And hours together, days, not days together only when there was a cyclonic storm and the entire area being inundated with water and trees fell down, and that makes a power cut for a longer time. Now see, let's read this problem. 1.307 gram of hydrated chloride of a metal X was heated to a constant mass, and finally final mass of the anhydrous chloride was this. Treated with an excess sulfuric acid, 1.582 gram of anhydrous chloride gave this gram of anhydrous sulfate. The specific heat of the metal. Oh, no. This has to be. I will never recommend. Because this will involve Dulong and Petit's law that we have abandoned. I'm sorry. In the original file, I should delete that. Next, no. We'll not waste our time. Okay, then let me look to. Oh, this is isomorphism. We will take this problem as a problem without branding it as a law of isomorphism, just as a stoichiometry problem or as a mole concept problem. We will take that. The only thing is that isomorphous compounds, they have identical crystal structure, similar formula. Supposing I say the Epsom salt, which is magnesium sulfate dot 7 water, is isomorphous with the zinc sulfate, hydrated zinc sulfate, ZnSO4 dot 7 water. The formula is same. The number of water of crystallization molecules are also same. So they're called isomorphous salts. So in that case, you are asked to find out the atomic mass of the unknown. Not unknown here, zinc, everybody knows. Calculate the magnesium. And zinc, it is given. It is about 65.5, but it is given 65. So if one is given, the other one you have to find out using this simple percentage composition. Well, as if we do not know the percentage, the atomic mass, the molar mass of magnesium. We know it is 24, but we will find out from experimental data and with a knowledge of the atomic mass of one element, zinc. No, I would prefer to discuss this problem. Okay. This we will leave it. Let me not. Nobody knows. This instructor is a bit mad fellow. Nobody knows if you'll be interested to. But I'm not finding any madness in any of you. Let's see. Devans appears to be, a passionate guy. Let me see. Well, zinc sulfate, we know. We have to presume that since we know the atomic mass of zinc, and also we know the valencia is 2 plus, sulfate is 2 minus, so zinc sulfate dot X watt. We do not know. It's not saying it is heptahydrate. Magnesium sulfate contains this magnesium and this percent of sulfate and rest water of crystallization. We do not know.
Oh, of course we know, but we do not know. For this numerical, we do not know. So zinc sulfate contains 22.6% zinc by mass, 33.5% sulfate by mass, and how much remaining kete percent rohila water? 100 minus the sum of kete bharla setiki water. Sir, 43.9. 43.9. Is it okay? So, since the two salts are isomorphous, the law of isomorphism says that their formula are same. This is magnesium sulfate, and as if we do not know the atomic mass. This is very, I'm doing this only to give you an idea how you play with percentage composition that I'm saying. MgSO4 dot same X water. It has to be X water. Otherwise, it will not be isomorphous. The crystal structures have to be same. They contain same number of water crystallization. That contains 9.75% magnesium and 39.02% sulfate ion, and the rest कितने वाला? Sir, 51.23. 51.26% water. Sir, 23%. 23% water. The only thing we do not know, this this atomic mass is 65 is given. So it is asking to find the atomic mass of magnesium. So who can give me an idea, throw some light how to tackle this problem, this mass basis? This is Excuse all. me. Yes, Devans. Sir, can you please explain the word isomorphous once again? Well, if two or more crystals, ionic crystals, have similar formula, same number of water crystallization, if at all they are hydrated. If they are not hydrated, like KCl, potassium chloride is not a hydrated salt, is supposing is isomorphous with rubidium chloride. Both are not both are not hydrated salt, but they have similar formula, NaCl, KCl, RbCl, and if their crystal structures are same, then they are called isomorphous to each other. So this problem is saying the hydrated magnesium sulfate is isomorphous with hydrated zinc sulfate. So these two are hydrated salts. Therefore, not only their formula will be same, but also the number of water crystallization have to be same. That is the law of isomorphism. Got it? Yes, sir. Thank you, sir. Yes, Payuja, କହିଲ କେମିତି ଆକୁ ଆମେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା? सर सर जो ZnSO4.XH2 रे तार जदि आमे जो 43.9% होची H2 तो जदि टोटल मास टाको लेट बी माने टोटल मास टा एठी बाहर करि हबो किंतु जो H2 रो मोलार मास टाको एठू माने बाहर करा अल्टीमेटली कोन भारियो? एक्स्ट्रा बाहर करा अछि। यस 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 पायो जी मैंने राम रतन घन पाय এই जो डेटा देइची एथरु एक्स्ट्रा बाहर जिबा 101% इजी एक्स्ट्रा एटी बाहर गला माने बाकी सब परसेंटेज देइची एटा y धरनबा कि बाहर कर दवा कोन असुविधा अछि वर्तमान चाललो मोलार मास बाहर करिबा कार ना ZnSO4.x अनुसार कोन ना जिंक इज 65 प्लस सल्फेट ता देखिबो सल्फर 32 एटा 64 एटा 96 हो ए सल्फेट आउ 18x वाटर टा 18 x मॉलिक्यूल्स अछि तो 18x एटा केते मिसले केते हला 6 5 11 1 9 6 13 1 14 प्लस 18x ठीक अछि अरे मोर
जदि कैलकुलेशन किसी मिस्टेक थाए तमे पॉइंट आउट करिवो मिस रीटा ठीक अछि सर सो माने 160 9 5 9 6 5 11 रु 1 1 6 9 6 15 के 16 ओ ये भूल अछि 162 ना 61 61 मतलब 2 कहउथलो so 161 plus 18x होची तार मोलार मास इन टर्म्स ऑफ x सेतिरे केते अछि ना जे कोनसी गोटा को नहीं परिबो 161 plus 8 जे कोनसी गोटा को नहीं परिबो एति कि ग्राम जिंक सल्फेट डॉट x वाटर रे अच्छी रे अच्छी Devans might be wondering what अच्छी it contains केते ग्राम ये कोई परिबो केते ग्राम वाटर अच्छी की कोई परिबो केते ग्राम वाटर अच्छी Devans yes एति कि ग्राम जो लिखिली जिंक सल्फेट डॉट्स x वाटर रे केते ग्राम Sir, 18x. Precisely 18x precisely अच्छी 18x ग्राम वाटर ताले एक रे केते 100 रे केते एक रे केते 100 रे केते 18x by 161 plus 18x into 100 and यार percentage already हमें जानी छु it is 43.9 9 ना केते 9 तो आज्ञा सर तेणु ताकू हमें इक्वेट करिवा यदि this is equal to is equal to 43.9 जो बाहर चला तबे x किते बाहर करो x टा को राउंड अप करियो पड़ियो टू द नियरेस्ट होल नंबर से गोटे 6.99 बाहरियो कि 7.01 बाहरियो हेलो एंड वेलकम to the video and if you are really watching and following you can just say hi to me in the chat box or if Sir, you are X will come shying nearly. away yes केते हला Sir, X will come nearly 7 point something. अरे केते सेटा जण के कैलकुलेटर धरि करी करो डोंट बी यू नो लेथार्जिक आई डिटेस्ट दोज हु आर यू नो Sir, से करिवो मु तो बसिबी से तो करथुवो मु तो बसिबी तमे गुटे कैलकुलेटर धरि की वर्तमान आसी गला समय कैलकुलेटर इज अ मस्ट with you while you are with me when you are not with 7.03. huh? So 7.03 Out bar. no one accepting Devas nobody is calculating none khali bastan a passive so the I may think of you know abruptly ending the program today that is my feeling now why mu 10 days कहिछि बिली 10 days करिवि किछि guarantee अछि I can abruptly stop today because I find the majority of you are alienated you are not giving me the cooperation the interaction as I expected so there is no need to waste your valuable time and my valuable time is everybody's invaluable gift of nature we have to honor it कितने बार 7 point Sir, 0, 3 bar. so that has to be rounded up to the nearest number 7 तो हमें जानी गले से क्रिस्टल से जो मॉलिक्यूलर हाइड्रेटेड क्रिस्टल रो एम्पिरिकल फार्मूला ZnSO4.7 वाटर तमने मैग्नीशियम सल्फेट रो मध्य सेया रहिबो केवल मैग्नीशियम तक हमें चीनी ने एमरे त एटॉमिक मास जानने x तर वर्तमान चलो मैग्नीशियम सल्फेट रो बाहर करिवा x + 96 + 18 126 एति की ग्राम रे जा गुटे गले हबो ए एका जे कोन सी केते ग्राम मैग्नीशियम अछि सब तो जणा अछि मैग्नीशियम अछि 9.75 धरो 9.75 धरो जा गुटे नेले भी चलिबो नो नो आई एम सो सॉरी रे x ग्राम अछि आई एम सो सॉरी x ग्राम मैग्नीशियम अछि रे मैग्नीशियम अछि
एक रे केते 100 ग्राम रे केते x टा अननोन अछि x बाई x प्लस एटा मिसेले केते हो 6 6 12 2 रखला 1 न 2 1 रख 12 1 2 2 2 2 into 100 so that is equal to 9.75 this is very simple so it x केते बाहरला टिके हिसाब कलो Sir, 23.98. 23.98 which is approx 24 so आमे जानि दिलु सेटा ए डेटा रु ए जो एक्सपेरिमेंटल डेटा रु मध्य बाहरी गला कारण आमे जो परसेंटेज दिया जाय छी सेटा एक्सपेरिमेंटल डेटा धरो 100 ग्राम से नेले मैग्नीशियम सल्फेट हाइड्रेटेड क्रिस्टल नेले सेथिरु हिट कला पर जति कि वाटर बाहरला ताकू मेजरमेंट कले तार मास ताकू कैल्शियम क्लोराइड अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड नेले तार प्रथमे ओजन करकी तापरे सबतक रिएक्शन अरे हीटिंग सरियाला परे आउ किछि एक्स्ट्रा मझरे मझरे देखिले तार वेट केते बढ़िला गुडे समय हिट कले देखल को मैक्सिमम वेट बढ़ला एति आउ वेट बढ़ुनी सो जति कि वेट बढ़िला सेटा वाटर तापर ताकू डिकंपोज कले डिकंपोज करके मैग्नीशियम मेटल को सेपरेट कर देले सेटा केते ग्राम रहइला आगो केते ग्राम वाटर बाहरला केते ग्राम मैग्नीशियम मेटल रहइला मैग्नीशियम केते केते सेना रे जीवो ताकू मैग्नीशियम सल्फेट को स्ट्रांगली हिट कले मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन सो दिस इज अनदर एनी सल्फेट को तमे हिट करा जीवो मैग्नीशियम सल्फेट हो कि जो सल्फेट हो वी स्ट्रांगली हिट कले मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस SO2 प्लस O मेटल वैल्यू सो एटा को बैलेंस करा हिट सो मैग्नीशियम सल्फेट बाहरला मैग्नीशियम ऑक्साइड बाहरला एते ग्राम 100 ग्राम हम मुळु नै दिले 100 ग्राम MgSO4 डॉट्स x वाटर की 7 वाटर धर हो जे x तो जणा पड़ी वाला से न हो पछे हमें तो मास कैलकुलेशन करिवा किछि फार्मूला दरकार नै x लिखले भी चलिबो सो वाटर केते बाहरला जणा पड़ी वाला धर 100 ग्राम रे अछि 10 ग्राम कि 12 ग्राम वाटर धर बाहरला एक्सपेरिमेंटली एटा नै गले हिट करिकरी नै गले सेपटे गोटे डिहाइड्रेटिंग एजेंट ताकू धरला तार मास जति इंक्रीज कला तापर देखिले मैग्नीशियम सल्फेट जो अनहाइड्रस रहला ताकू स्ट्रांगली हिट कले ये उडी गला केते मैग्नीशियम ऑक्साइड रहला पूनी मैग्नीशियम ऑक्साइड को गोटे 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 रिड्यूसिंग एजेंट देले कोक ताकू स्ट्रांगली हिट कले आसला मैग्नीशियम प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड अल्टीमेटली मैग्नीशियम केते ग्राम बाहरला धरो 15 ग्राम तेबे 12 वाटर 15 ग्राम मैग्नीशियम मिसे दियाला 100 रु माइनस कर दियाला सेति की सल्फेट तो सल्फेट सेम धरा जाय सल्फेट तो उडी गला SO2 O2 होई प्योर मैग्नीशियम मेटल केते बाहरला 100 ग्राम रु जणा पड़ी गला देन केते वाटर बाहर छि जणा पड़ी गला देन सेतिटा को मिसी की 100 रु माइनस करले केते सल्फेट आयन केला सल्फेट रो मास केते बस एटा डेटा एक्सपेरिमेंटल डेटा सेथुरु धरि करी एटा बाहरला जिंक सल्फेट को सेमति गला हाइड्रेटेड सेवन आइसोमर्फस बिली हमें जानिलु त क्रिस्टल स्ट्रक्चर देखिलु समान अछि तो हाइड्रेटेड अछि त डेफिनेटली सेमानकर वाटर क्रिस्टलाइजेशन भी समान थिबो एंड दैट दीटा जकर डेटा अछि आ जिंक रो जोडा अछि सेथुरु एक्स्ट्रा बाहरलु 7 वाटर बाहरला त ताकू यूज करके 7 वाटर मैग्नीशियम सल्फेट रे मैग्नीशियम रे एटॉमिक मास बाहरला ये बुझिलो सर सर हमर तो डाटा रे थिले कि होची मैग्नीशियम सल्फेट रे केते परसेंट मैग्नीशियम अछि जिंक सल्फेट रे केते परसेंट जिंक अछि आ जिंक रो एटॉमिक मास भी देइथला तो हमें जदी मैग्नीशियम सल्फेट रे केते परसेंट मैग्नीशियम बाय जिंक रे केते परसेंट जिंक अछि जिंक सल्फेट रे इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम बाय एटॉमिक मास ऑफ जिंक करिया
that is not a logical concept. अवश्य in this case it is true. कहीं ना तार आइसोमॉर्फस सॉल्ट तार वैलेंसी समान तेणु तार इक्विवेलेंट मास भी समान एक्चुअली जो रेशियो टा इक्विवेलेंस थाए लॉ ऑफ इक्विवेलेंस जोटा अछि मु परवर्ती काल रे कहबी जे मास बाय मास इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास बाय इक्विवेलेंट मास. In this case, since valency same, equivalent mass is nothing but atomic mass by valency. Magnesium रो equivalent mass होची 12 24 by 2. यार जिंक रो 65 by 2. तेणु 2 2 कटि गला से मोलार मास बाय मोलार मास इज इक्वल टू नेले x धर नेले गोटा को आरटा मास बाय मास बाहर जो. Yes, in this case you can also प्रथमटा आगो 7 बाहरला ସେଇଟା ସେ ପଚାରିଛି परसेंटेज ଦରକାର ନାହିଁ ଯଦି ଖାଲି ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ଟା ପଚାରିଛି इट्स ए वेरी गुड थिंकिंग ସେ ने ପଚାରିଛି also calculate the number of crystallization number of water molecules ସେ ପଚାରିଛି ସେଇଟା ପଚାରିଛି ବୋଲି ତମେ କରିବାକୁ ପଡିବ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଖାଲି एटॉमिक मास ପଚାରିଥାନ୍ତା ଆଉ ତମେ इक्विवेलेंट कांसेप्ट ଜାଣିଛ ତ এই केस रे mass by mass is equal to equivalent mass of magnesium by mass of zinc is equal to equivalent mass of magnesium by equivalent mass of zinc. So mass 100 ग्राम रो magnesium रो mass केते अछि 9.74 74 ना 75 कौन अछि 75 5 यार मास अछि 22.6 मास तो डेटा अछि तेणु इक्विवेलेंट मास होछि एटॉमिक मास बाय वैलेंसी ए केस रे आइसोमॉर्फस रे समान बाय 2 सो हम जानि नै एटा बाय इक्विवेलेंट मास 65 बाय 2 सो 2 2 कटि गला त माने मोलार मास रो रेशियो संगे समान हला तो एथुरु मध्य हमें बाहर कर दे परिबा बाहर कलो केते बाहर छी सर 28.04 भाग 28.04 समस्त से देखिला उतरे टिके 22.6 सेतिक बार छी Yes, sir. Sati पाखापाखि भाउछ 28.04. then that is not correct. अच्छा आ गोटे जिनस मु वेरीफाई करिया चाहूची एटा हमें वाटर नहीं गले एई जिनसटा को हमें जदी नबा 161 plus 18x gram of zinc sulfate dot 6x water contains 165 gram of zinc ताले 100 रे केते अछि होगा बाहर को जिंक वाइज हम अंक करिवा सर मु समिति करथिली सर समान ही बाहरची into 100 and that is equal to zinc रो percentage देछि केते ना 22.6 ता आउथरिटी कॉलम तो एकदम स्वयं तो पूरा साइलेंट रहि जेछि ता पाकर किछि नाही से 2 के 2 वाला से कोछि मो पाकर तो ये नाही कैलकुलेटर नाही मु करी कोन से बस सेछि जुगाड़ करिवो ना केते बायोजा ओटे कैलकुलेटर नहीं के कैलकुलेटर सो दैट आई विल बी मोटिवेटेड अदरवाइज मु कोन कर मु कैलकुलेट करिवि ना खाली देवांश कैलकुलेट करिवो रिजल्ट अखड़ा भाजी थरे
ସେ ରେଜଲ୍ଟ ଅଖାଡୁଆ ବାହାରିଥିଲା ଯେ ପୁଣି ଥରେ ଇଏଟା ଦେଖେଇଲେ। ନା ଖାଡୁଆ କରିଦିଅ ତାକୁ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉଟା ମୁଁ କହିଲି ଜିଙ୍କ ୱାଇଜ କ୍ୟାଲକୁଲେଟ କରିବା ପାଇଁ ମତେ ଖାଲି କ୍ୟାଲକୁଲେଟ କରିକି ଦିଅ 65 by 161 plus 18x into 100 is equal to 22.6 এইটা ক্যালকুলেট করকে x টা কেটে বাহারলা কো দেবাংশ কହୁଛି ସେଇ ଏକ 7 ପାଖାପାଖି ବାହାରଲା କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖ ଆଉ ଜଣେ ଭେରିଫାଇ କର ଟ୍ରୁଲି Sir 7.04 ଦେନ୍ ଆମର ଏଠି ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଲାଗି ପାରିବ ନାହିଁ এইটা এই ক্যালকুলেশন টার ভাবছি কেতে 8 পয়েন্ট সামথিং 28 পয়েন্ট বাহারছি এই যে Yes, sir. হ্যাঁ Yes, sir. Yes, sir. সো এইটা এই প্রিন্সিপলটা এটি অ্যাপ্লিকেবল হবো নাই কাহিঁকি না সেইটা অ্যাপ্লিকেবল हुए যেতেবেলে গোটে পার্টিকুলার কারেন্ট পাস করা যায় ইলেকট্রোলিসিস করা যায় এবং সেম কোয়ান্টিটি অফ চার্জ পাস করা যায় দ্যাট মিন্স সেম কারেন্ট উইথ সেম টাইম পিরিয়ড এপটে বাহারলা এপটে ডিপোজিট কলা জিঙ্ক সেপটে আউট সেল রে ডিপোজিট কলা ম্যাগনেসিয়াম the cells are connected in series so that same current passes say case re mass by mass is equal to equivalent mass by equivalent mass কিন্তু এইটা অবশ্য 100 গ্রাম রু এতিকে ଅଛି 100 গ্রাম এতে আকু নেইଥିଲେ কিন্তু সেইଥିରେ ম্যাগনেসিয়াম নাই ଆଉ ଗୋଟେ হাইড্রেটেড সল্ট সেই 100 গ্রাম নেলে ସେଥିରେ ସେଇ 7 ୱାଟର ମଲିକ୍ୟୁଲ ଅଛି ସେଥିରୁ ଦେଲା 22 ଅଲଗା ତେଣୁ ଆମେ ଭାବୁଥିଲେ ମାସ୍ ବାଇ ମାସ୍ ଆପ୍ଲିକେବଲ ହବ ଡିଫରେଣ୍ଟ ନେଲେ ବି ବଟ୍ ଏଠି ସେଟା ଆମେ ନେଇ ପାରିବା ନାହିଁ ହେଲା so this suggestion which I was trying to verify whether that can be applied here into different compounds not involving any charge same compound नहीं था for example ମୁଁ କହୁଛି ଧର ଗୋଟେ magnesium oxide କୁ ତମେ डिकम्पोज କରିକି magnesium ପାଇଲ x ଗ୍ରାମ ଆଉ y ଗ୍ରାମ ପାଇଲ ଅକ୍ସିଜେନ same compound तबे सेम कंपाउंड रे दिखे ताले मैग्नीशियम x by y is equal to 12 by 8 because ऑक्सीजन रो वैलेंसी 2 तेणु तार इक्विवेलेंट मास होची 8 एटा आरो वैलेंसी 2 12 तो से केस रे जदी एटा जणा नथिबो x टा y टा जणा थिबो किंतु 12 टा जणा नाही p 8 टा जणा अछि सो p कैन बी फाउंड आउट इजीली सेटा डिफरेंट कंपाउंड हे जाउची I will look into it. যদিও 100 গ্রাম আকু নিয়া যাইছি সে তাকু নিয়া যাইছি কিন্তু সেই কম্পাউন্ড রে যদি ম্যাগনেসিয়াম থান্তা ইয়ে থান্তা তাহলে এতে কেতে গ্রাম বাহারুছি এথরু কেতে গ্রাম বাহারুছি তাকু করতিলে আমি দেখি থান্তে কিন্তু এটি ओके नेक्स्ट प्रॉब्लम ना इथे एप्लीकेबल होबनी जदी कोठी भूल रहिला डेटा कोठी रॉन्ग अछि कोठी आउट टिके इंस्पेक्शन करिकि तुमको परे कहबी एनी अदर डाउट एटा since it is involving the Dulong's and Petit's law which is obsolete we will not discuss out sir sir say sir sir ସେଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରେ ଯଦି ଆମେ ସେ ତ ଜିଙ୍କ ଆଉ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ଦିଟା ଅଲଗା ଥିଲା ସଲଫେଟ ତ ଦିଟା ଯାକ ସମାନ ଅଛି ତ ଆମେ ସଲଫେଟ ର ବି परसेंटेज ଦେଇଛି ତା परसेंटेज ଆମେ ସଲଫେଟ ର ବାହାର ବି କରିପାରିବା ମୋଲାର ମାସ ତ ସେଇଟା ଇକ୍ୱେଟ କଲେ ଜିଙ୍କ ଆଉ ସଲଫେଟ ରେ ପକେଇଲେ ଗୋଟେ ରେ ତ ବାହାରି ପାରିବ ୱାଟର ରେ ବି ବାହାରି ପାରିବ 7 वाटर बाहर कर देला परे 7 टा जदी बाहर कर देइछो
ताहले से कौन कहले आ गोटे प्रपोजल देला MgSO4.7 वाटर बाहरला एटा गोटे अननोन रहिला खाली x ए गोटे अननोन रहिला से लॉ ऑफ इक्विवेलेंस यूज करिया को चाहूची सेम कंपाउंड रे जदी होछि ताहले काहे कि न करिबा तो आपको मैग्नीशियम x रे x ग्राम रे सल्फेट होछि 96 अछि नहीं मास एक्चुअल मास होछि 9 पॉइंट केते 75 बाई सल्फेट रो मास केते अछि मैग्नीशियम सर 39.02 39 पॉइंट हाँ 39.0 is equal to से कहूची अरे दिनो गुड मॉर्निंग प्रिंसिपल सर दीनबंधु सर and magnesium supposing it is x by 2 sulfate होची 96 by 2 तार भी so 2 to कटले x बार कल केते होची So 23.87. सर 98 23.98 yes same compound रे हमें law of equivalence यूज करि पारिबा different compounds रे यूज करि पारिबा नाही किंतु जेहेतु 100 ग्राम दीटा कर थिला आमे काहे कि न करि पारिबा मु तुमको परवर्ती काल रे बुझेई जेतले लॉ ऑफ इक्विवेलेंस मु कहिबी सेते बेले तुमको बुझेई आउ एनी अदर डाउट सर मोर डाउट ला Oh. सर आपण पढिला बेले कहितले कि होची जतले एटॉमिक रिलेटिव एटॉमिक मास जोटा सेटा होल नंबर होइनी हम 22 पॉइंट समथिंग में 23 निया हुए No, I'm talking of isotopic mass. Individual isotopic mass is never a whole number, excepting carbon 12 or 12 isotope टाको हमें धरिचे standard. सेटा 12.000000 all the zeros of the world. किंतु अन्य मानकर isotopic mass. Average ताको हमें तो calculate करू depending on the abundance percentage abundance हमें calculate करू. But isotopic mass टा mass spectrometer रू बाहर इसमें बंद करो शुणुच जो बंद करो तो सेटा सब बेले गोटे डेसिमल रे बाहरिबो बट क्लोजर टू ए होल नंबर तुम्हार क्वेश्चन कौन धर सोडियम टा 23 हमें नौचे से सोडियम इज मोनो आइसोटोपिक तर आइसोटोपिक मास बाहरिबो अकॉर्डिंग टू कार्बन स्टैंडर्ड 12 पॉइंट धर 9789524 एमटी बाहर ताकू हमें कैलकुलेशन कराल को 23 नौचे and that is also the mass number of sodium 23 isotope because sodium doesn't have any other natural isotope तुम क्वेश्चन बुझिलो ना नहीं सर किंतु गोटे कैलकुलेशन करथली सेतरे होची इक्वल न आसी इक्वल आसी गला हां कैलकुलेशन करथली सेतरे सोडियम रो 23 माने समान 23 ही आसी गला वो सेटा जो डेटा क्वेश्चन जो दिया जाए सेटा गोटे बहुत लोक बैक कैलकुलेट करी करी क्वेश्चन तैयारी करथांती से माने एक्सपेरिमेंटल डेटा देखो एठी जेमति 24 गोटे कोठी एग्जैक्टली आसी गला नि 24 ना कोन गोटे कोन उथरे गोटे आसी गला नहीं मा पूर्व अंक रे गोटे कोन एग्जैक्ट आसी गला कोनटा कहलो सर जो 48 हां सर 48 असथिला जो एक्स बाहर करथिला केते बार थिला
ମାନେ ସମାନ 48 आसीगला तो से क्वेश्चन टा निश्चित भाव बैक कैलकुलेशन करिक आसला केबे भी एग्जैक्टली आसीबनी एक्सपेरिमेंटल एरर रहिबो एक्सपेरिमेंटल एरर न रहिले भी यू नो सब गुडाक रो ऑक्सीजन रो एटॉमिक मास आइसोटोपिक मास इवन एवरेज 16.0 समथिंग 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 किंतु आमर द प्रिसिजन एक्सपेरिमेंटल रो प्रिसिजन एते नाही जे आमे ताकू 16.0 समथिंग समथिंग द एवरेज एटॉमिक मास नहीं कैलकुलेट करिबा 16 रो 99.78 17 रो 0.02 18 रो 0.2 एगुडा को बेसिस रे 16.00 समथिंग समथिंग सेमति बाहरी बन तेणु हमकू जेहेतु एक्सपेरिमेंटल लेवल टा एते प्रिसाइज नुहे एक्सपेरिमेंटल एरर अच्छी ये भी ही पारे जे 48 भी 7 को 7 बाहरी पारे बिकॉज ऑफ एक्सपेरिमेंटल एरर न बाहरी पारे बैक कैलकुलेशन कराई पारे हला बुझिलो नहीं सर सेटा क्वेश्चन ने भालानी हम जो रिलेटिव एटॉमिक मास को कि मास ऑफ एन एटम बाय 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 रो मास सेइथरे भाला कि 23 इक्वल माने इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन नहीं आइसोटोपिक मास होची एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी मास स्पेक्ट्रोमीटर रे बाहर तमे जदी कोनोसी कैलकुलेशन रो बाहर करिवो 23 एग्जैक्ट 23 देन दैट इज सम कुक्ड डेटा जो डेटा रो तमे यूज करछो एग्जैक्टली 23 ही भारी पारिबो ना से सही गोटी कहि देथै कोठी भूल करछ को मु जानि को अंक मत आई डोंट नो व्हिच अंक को कैलकुलेशन तो मु जानि ना सर मु कहि देबे ना नहीं 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 I cannot do that because you are misleading me. I am not happy with you because you have not done any problem and rather you are eating away my vital time period, which I can give it to Devas, who is appearing to be more serious. तमे मते पठेइबो पठेइला करे मु देखिबी ओके I am not to be taken as granted मु तमे मोर थिलो बिली यूरेनियम र थिलो बिली मु तुमे समय नष्ट करिबा हमर that cannot be इते पिला अछंती बाहर लोक देखुचंती तमे गुटे साधारण मु कहली हबो नाही तमे कहू हेला यू आर नॉट एक्सेप्टिंग थिंग दैट केबे भी हबो नहीं तको राउंड अप करू गुटे कैलकुलेशन रे बाहरला 23 तमे गुटे बेकार समय नष्ट करियो चाहू आई एम नॉट हैप्पी विथ यू आउ कोन डाउट अछि जोडा मु देइथिली गुटे खेल घर कथा तमे कहू मु कहितली गुटे कोठु करतली 23 एक्जेक्टली 23 बाहरला गुटे खेल घर कथा एटा मु गुटे कहूची हबो नहीं सेमती गुटे जदी भूल थिबो कोठी आमे आइसोटोपिक मास को नेइकरी काम करू तमे जदी कोनोसी डेटा रु एटॉमिक मास बाहर कलो 23 देन सेटा डेफिनेटली एक्सपेरिमेंटल एरर किंबा बैक कैलकुलेशन करी कराई छी जेंती एक्जेक्टली 23 बाहरी पहिला परे मध्ये भी तमे कहूछ नहीं मु हेला नहीं दिस इज नॉनसेंस आ किछि डाउट अछि करिचो हेनी ट्राई कर जेंती कहला एटा हमें दीटा पूरा क्वेश्चन टेक अप करले गोटे क्वेश्चन मु छाडी देली कारण एटा लॉ डुलोंग एंड पेटिट्स लॉ इज नॉट इट्स ऑब्सोलीट मास स्पेक्ट्रोमीटर आसी गला पर कि एवरेज एटॉमिक मास के बाहर कर सेटा हो एवरेज एटॉमिक मास बाहर करियार बाट तो हमें यदि इंडिविजुअल आइसोटोपिक मास हमें बाहर करछु विथ सच ए प्रिसिजन एंड देन गेटिंग द एवरेज who bothers about Dulong and Petit's law say specific heat capacity sangare atomic mass multiply kale only for solid metals solid elements not for liquid and gaseous element so kette tar drawback is equal to 6.4 approximately se dekhile je specific heat capacity sangare jodi tar atomic mass multiply karibo 6. Otherwise the approximate atomic mass is 6.4 by the specific heat capacity. And say through approximate atomic mass रू हमें बाहर कर दे परिवा अन्य डेटा रू हमें बाहर कर दे परिवा exact atomic mass because equivalent mass concept टा कोई नहीं that is the experimentally determined quantity
तर एतिक ग्राम गोटे मेटालिक ऑक्साइड नहीं करी ताको डिकंपोज कलो एतिक ग्राम बाहरला मेटल एतिक ग्राम ऑक्सीजन सो जो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस कहूची मास बाय मास इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास बाय इक्विवेलेंट मास सेही थ्रू हमें एग्जैक्ट इक्विवेलेंट मास बाहर कर देले वी डू नॉट नो इट्स वैलेंसी किंतु गोटे एलिमेंट जासे कंपेयर करूचे तार वैलेंसी जानिचे ताकू चिनिचे हम सो एटॉमिक मास बाय वैलेंसी करिक तार इक्विवेलेंट मास बाहर कले एटा अननोन इक्विवेलेंट मास बाहर गला and we know equivalent mass into valency is equal to atomic mass so the approximate atomic mass बाहरिला 6.4 रे डिवाइड करिक specific heat capacity सेथरे तुमे जदी equivalent mass को हरिबो experimental equivalent mass को exact equivalent mass को then you get valency is always a whole number बाहरिबो धरो 3.2 it cannot be 3.2 it has to be rounded up to 3 बाहरला 3.8 rounded up to 4 3.5 के बाहरी बनी मिड पॉइंट रो आइदर एपट को बाहरी बन सेपट को बाहरी सो वैलेंसी जणा पड़ी वाला माने 3 or 4 or 2 then you take the equivalent mass which is exact multiplied by valency exact valency that will give you exact atomic mass so it average atomic mass je dabo and that was for के बुझला टेकलो मु जोटा को बुझेली लॉ डुलोंग एंड पेटिट लॉ यूज करी केमती एग्जैक्ट एटॉमिक मास बाहर करंती के बुझिलो बिकॉज़ इक्विवेलेंट मास ऑलरेडी तुमको दिया हिथिबो बा तुमे एक्सपेरिमेंटल डेटा दिया हिथिबो सेतु तुमे एग्जैक्ट इक्विवेलेंट मास बाहर करबो के बुझिलो सर बुझ पालेंटे ये बुझिलो ना बुझि पारलेनी so that is the thing why I rejected this now because law of equivalence because I thought at least one of you can understand what I am saying. None could understand, so that indicates that you have to be much more, receptive if we will be together. We will be together. So it's you have to be receptive. Coil law of equivalence, coil mass by mass is equal to equivalent by equivalent mass. Equivalent mass is determined experimentally means it is a correct value. देखो ये जो स्पेसिफिक हीट देइछि 0.047 भी सामल कहि देले माने मु टिके डाउन हे गेले कहला माने मते रिकॉर्ड लाउछि अच्छा देखो लॉ डुलोंग्स एंड पेटिट्स लॉ जो मानधाता लॉ आजिकली चालू नहीं से कहूछि कोन गोटे सॉलिड एलिमेंट तार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बा स्पेसिफिक हीट into atomic mass is approximately equal to 6.4 approximately तो स्पेसिफिक हीट माने कोन गोटे डिग्री सेल्सियस बढ़ेवा पई टेंपरेचर गोटे यूनिट मास 1 kg हे पारे 1 ग्राम हे पारे यूनिट मास ऑफ एनी सब्सटेंस to increase the temperature by 1 degree Celsius what is the amount of heat absorbed that is called the specific heat capacity and the data देछि calories per Kelvin per gram रे देछि हमर केमिस्ट्री रे हम सब प्रकार यूनिट को हम यूज करू फिजिक्स रे ऑलवेज एसआई बट वी कैन यूज बिकॉज़ हमर मास एटॉमिक मास इज ग्राम एटॉमिक मास केजी एटॉमिक मास में सो हमें सब यूज करू ग्राम यूज करू केजी भी यूज करू सब तेणु एटा स्पेसिफिक हीट देछि से एलिमेंट रो 0.047 into x is equal to 6 is roughly equal to 6.4 तो x केते बाहरला 6.4 हे ग्राम रे बाहरियो एटा मध्य कैलोरीज एटा कैलोरीज रे सो एटा कैलोरीज पर केल्विन बाय केल्विन इनटू ग्राम सो एटा कैलोरी पर केल्विन एटा खाली तेणु पर केल्विन कटला कैलोरी कटला ग्राम टा सेपटो गला सो एक्स्ट्रा ग्राम रे भारी सो 6.4 कैलोरी पर केल्विन ग्राम टा एपटे अछि सो अल्टीमेटली एक्स्ट्रा भारला
तार एटॉमिक मास केते बाला 6.4 by 0.047 केते सर 136.17 एतिकी ग्राम पर मोल मोलर मास टा बाहरला बट अप्रोक्सीमेट दिस इज वेरी मच अप्रोक्सीमेट कारण ये जो मल्टीप्लाई जो प्रोडक्ट जो बाहर कले डुलोंग एंड पेटिट सो दैट इज अप्रोक्सीमेट कार 6.2 वाला कार 6.7 वाला कार 6.4 रो एपोर्ट सपोर्ट रहिला तेनु से एवरेज करी की कहले अप्रोक्सीमेटली 6.4 बाहरला अच्छा जो डेटा देइची सेथरो हमें इक्विवेलेंट मास बाहर करि परियो कोन ना एतिकी ग्राम ऑफ हाइड्रेटेड क्लोराइड ऑफ ए मेटल x on heating to constant गोटे substance heating gave a constant mass and the final mass of the anhydrous chloride was 80 gram. Treated with excess sulfuric acid, 80 gram of anhydrous chloride gave 80 gram of anhydrous sulfate. So, एटा ए डेटा रू तुम्हें बाहर करिवो कोन ना इक्विवेलेंट मास once इक्विवेलेंट मास भर बाहरला गोटे कथा कहूँ कथा तो पढ़लानी कथा पढ़लानी गोटे ये भी है जो मजा गोटे पेशेंस टेस्ट हो पेशेंस टेस्ट होची ते मोर एक्चुअली माइंड रे थिला कोन जे मो एडवांस मोर कांसेप्ट प्रॉब्लम छुडा को तुम डाउट्स थिबो मु करी तुम एइथर पढुछो मु बेकार तुम काहे देली तमे निजे चूज करिया कथा मु कहि नथिली ते एडवांस मोर कांसेप्ट तुम आगो करो एइटा एथरे अछि ए बेकार जिंस सब अछि तथापि बेकार जिंस किछि नाही तो हमर कोन हला जे 1.307 हाइड्रेटेड क्लोराइड of metal X. We do not know the valency of X. लिख परियोनी X Cl it Y लिखिबा. We do not know the valency of X dot Z water. ऐसे ताको वाटर को खलास कला परे खाली हाइड्रेट अनहाइड्रस क्लोराइड होची खाली HCl Y जहा भी होला तार मास होची केते ना 1.114 ग्राम तापरे से जो क्लोराइड टाकू सल्फ्यूरिक एसिड रे ट्रीटमेंट कले बाहरिबो ए प्रेसिपिटेट gives sulfate so XSO4 बाहरिबो अवश्य सल्फेट रो वैलेंसी 2 और आर वैलेंसी Y प्लस HCl पारला इक्विवेलेंट कांसेप्ट रो एतिकी तारो advantage होची you see it doesn't bother about valency it does bother because it is the molar mass by valency no doubt किंतु आमे जते बडे बाहर कले से कहूची जे एतिकी ग्राम actual experimental 1.582 gram of the chloride anhydrous chloride gives ultimately जो precipitate करके dry करा हला 1.774 gram of anhydrous sulfate तो कौन हबो आमे कहिची प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस होची एथ्रू इटा बाहरची सो mass by mass is equal to equivalent mass by equivalent mass तो mass of मोडियर लिखुची मेटल क्लोराइड by mass of सेथ्रू बाहरची you know this is based on chemical reaction मध्य same compound भी ही पारे एवं chemical reaction भी ही पारे law of equivalence is applicable कारण मु law of equivalent concept तो मु कोई नहीं पड़ता so mass of metal chloride by mass of metal sulfate is equal to equivalent mass of metal chloride by equivalent mass of metal sulfate so it is already experimental data अच्छी 8 through 8 बाहर 1.582
metal it is 1.774 is equal to mass of metal ODR रे पढुची metal chloride equivalent गोटे compound ର equivalent mass is the sum of the equivalent masses of the acid radical and basic radical metal होची basic part so धर x so x धर एटा and chloride होची 35.5 because chlorine atomic mass is 35.5 तर valency होची 1 तो equivalent mass is same as its valency by metal sulfate E metal का सही x एठी आसला sulfate होची 96/2 sulfate रो molar mass होची 96 तर valency होची 2 minus so 96/2 48 so आपको calculation कले एठी x टा बाहर जो equivalent mass of the metal केते बारला एटा होची 48 mass by mass is equal to equivalent mass equivalent. That is applicable for a chemical reaction between reactant and product or between reactant and reactant or the same compound को जदि decompose करिवो ताले हबो तो केते बारला एटा को कैलकुलेशन करो कैलकुलेशन तो कण पणिकिया टाइम टेबल यूज करछो ना नहीं कैलकुलेटर को माने यूज करछो हट किलो कैलकुलेटर यूज करके मते को एक्स्ट्रा केते बाहरला अभी मोर एंटायर समयटा आज नष्ट होइगला बिकॉज़ मु तुमको कहि थांती एडवांस मोर कांसेप्ट आगो कर आउ एवरेज कांसेप्ट रे तुम एटॉमिक मास रही हो एवरेज कांसेप्ट को आस एटा एवरेज कांसेप्ट ना कोटा चल छै जोटा हां एटा एवरेज कांसेप्ट एगुडा को सब कर देलो नै हां एगुडा का एवरेज उडा को कर देलो सो 8 रु हमें 8 कले 7 जगह कर दैछ ना मिस समन ଆଜ୍ଞା sir केते बारला मो how poor you are in calculation एठु मते जणा पड़ जाउछ सर 67.49 yes 67.49 अन्य जणे के चेक कर दियो ठीक अछि ना नहीं 67.5 धर एटा हला एग्जैक्ट एटा हमें कैलकुलेशन रो करछो सो एक्सपेरिमेंटल एरर अछि धर प्रिज्यूमिंग दैट देयर इज नो एक्सपेरिमेंटल एरर दिस इज बाउंड टू बी एग्जैक्ट किंतु सेठी जो अप्रोक्सीमेट बाहरला हमें जानि छे जे इक्विवेलेंट मास ओडिया लिखि दोछि is equal to the molar mass by valency the atomic mass ei pare ionic mass ei pare molar mass by valency or the charge of the ion valency लिखि दोछि तेणु तेणु एठु valency टा एठी केते बाहरिबो ना molar mass approximate molar mass जोटा बाहरला which is approximate it is approximate valency value by equivalent mass which is exact so this is 130 केते बार थला 100 केते बार थला अरे हमर केते बार नथला डुलोंग एंड पेटिट लॉ यूज करिकरी हमें बहुत आगे रे सेटा को छाड़ दै छै केते बार थला अरे केते बार थला sir Sir 136.17
136.17 तो सेटा हमर अप्रोक्सीमेट बारतला डुलंग एंड पेटिट लॉ यूज करिकरी सो 136 पॉइंट केते बारला 17 17 बाय इक्विवेलेंट मास एग्जैक्ट जो बाहर गई थी एक्सपेरिमेंटल 67.49 इज इक्वल टू केते बारला अप्रोक्सीमेट बैलेंस सेटा बारे 2 पॉइंट समथिंग बारे कि 1.99 समथिंग बारे केते बारला Sir, 2.017. पॉइंट 017 यस भाईजा ଆଜ୍ଞା sir ସେୟା ଭଲ सो एटा 2.2 बाहरथिले भी चलिबो 2.3 बाहरथिले भी चलिबो असे निश्चय आइदर 0.5 रो सेपटकू न एपटकू बाहरियो सो द एग्जैक्ट वैलेंसी इज 2 because valency is a whole number charge is a whole number 2 minus 3 minus so 2 so exact valency जानला exact equivalent mass already experiment रो बाहर तेणु exact atomic mass टा बाहरला बा molar mass टा बाहरला exact equivalent mass 67.49 into 2 केते बाहरला sir 134.98 देखो केते डिफरेंस होची हमरो भारतला 130 केते भारतला 136.17 भारतला अप्रोक्सीमेट एक्चुअल हला 134.98 केते केते हमरो ये हे गला रिफाइनमेंट इन आवर कैलकुलेशन equivalent mass concept is an experimental concept based on experiment कोडे कंपाउंड को डिकम्पोज करिवो किंबा एति ग्राम मेटल संगे एति ग्राम ऑक्सीजन मिसिकरी गोटे कंपाउंड हैला एग्जैक्ट एति ग्राम मेटल संगे एति ग्राम ऑक्सीजन मिसला किंबा एति ग्राम कंपाउंड को डिकम्पोज करिकरी बाइनरी कंपाउंड को डिकम्पोज करिकरी एति ग्राम मेटल ऑक्सीजन बाहरला एति ग्राम मेटल क्लोराइड को डिकम्पोज करिकरी एति मेटल बाहरला क्लोरीन बाहरला तबे मास बाय मास इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास बाय इक्विवेलेंट मास कर देले हमर इक्विवेलेंट मास बाहरी वाला ये कंपाउंड रे मध्य सही भलिया तो एबे को ये बुझिलो एबे मु जो प्रॉब्लम टा बुझेली आपातत जदि वो इक्विवेलेंट कांसेप्ट तो डिटेल देइनी तार भीतर को तो मु पसेली आउ आई एम नॉट वेरी happy with the progress that we are making okay still Ayushman Vaibhav Emma Chinmayita Devans what happened Sir, I was disconnected, sir. Computer issue, sir. So, sir, I couldn't see the main part, sir. The law that you were talking about. okay then you can watch I will rewatch the video. Yes, sir. you can watch the video and understand ଆଉ କିଛି ଅଛି କି ତେବେ ଯେହେତୁ ତମେ କିଛି କରିନ advanced whole concept ତମେ କର ସବୁ ଦେଖ equal masses of nitrogen hydrogen प्रथम नंबर टा and methane are taken in a container in identical conditions presume that they do not react with each other find the ratio of the volumes of the gases करिक देखेलो देखिबा आंसर तो देइछि and you have to explain to me
ratio of their volumes जो अच्छी under identical conditions जो कही that is nothing but ratio of their moles, because moles are directly proportional to their volumes. That is the even principle. Equal volumes have equal number of moles at identical temperature and pressure conditions. So the ratio of their moles is same as ratio of their volumes. Any thinking? कौन करियो पढ़ियो काजा? Vivans? Yes, sir. Sir, ହେଇଗଲା sir ଖାଲି calculate କରୁଛି last. करियो पढ़ियो. First you tell me. Yes, sir. Sir, PV is equal to NRT. No. He is asking about the ratio. Find the ratio. So, Yes. sir, how we do it with the volume help? V is equal to NRT by P. Bismarck? No. I have not discussed about PV equal to NRT so far. So Okay, you will see to yourself that will not be required here. In one line you get the answer. Sir, suppose X gram of each gas is taken, then the molar ratio of every nitrogen, hydrogen, and methane can be W by H to the molar mass into CH4. तापर equal number of mole occupy equal volume at identical condition, ratio तापर बाहर जाए. Precisely, he is correct. तबे mass को molar तार केते number of moles को convert करियो. Nitrogen, hydrogen, methane धर समस्तंकर x mass अछि, equal mass. तो यार number of moles होची x by 28. यार mass होची molar mass होची 2, so x by 2. यार mass होची बार युक्त methane होची CH4, बार युक्त 4 16, so x by 4 16. So it hala r number of moles, यार number of moles hydrogen रो यार number of moles. तो number of moles संगे तार volume रो volume संगे proportional. So x टा कटि गला 1 by 28 is to 1 by 2 is to 1 by 16. तार लसागु नेलो लसागु सागु टिके तयारी करो. यार 28 16 लसागु केते हला 2 तार लसागु केते हो? हैं 112. 112 जे गुणी देले एटा केते होची 28 सर 4 4 is to एटा केते होची 4 is to 56 is to 7. is to 16 7 112. So this is the volume ratio. Mole ratio is same as volume ratio. Mass टा कटि गला. तो एटा PV एनर्जी को किछ आवश्यकता नाही, टेंपरेचर तो देइनी. तो बड PV एनर्जी उडे काई कि बेकार कहूछ मु I really regretted today because I did not ask you not to solve problems related to Dulong's and Petit's law. तुम केम जानिबो Dulong and Petit's law कोन? तुम उडे देखि देला नाही. एंड सेटा आगु को गलनी. हा सेटा हला ने हम जिबा advanced mole concept को नाही. So सेटा determination मु देखुनी. Anyway, second टा देखो. Calculate the number of moles of electrons. Number of moles of electrons present in 3 gram of ethane. Also find how many electrons are present in it. Hint they use molecular mass to find the number of moles, but use atomic number to find the number of electrons. Number of electrons present in different cells in an
in a neutral atom is same as the number of protons or the atomic number present in the nucleus. So यार मोलार मास होचे 12.24 30 ग्राम होची ग्राम पर मोल होची मोलार मास ताहले 3 ग्राम ता केते मोल ना 3/30 1/10 0.1 मोल अछि यार किंतु गोटे मॉलिक्यूल रे केतेटा इलेक्ट्रॉन अछि कार्बन रो 6 6 12 टा प्लस 6 टा 18 टा इलेक्ट्रॉन अछि गोटे मॉलिक्यूल रे तो गोटे मोल रे अछि 18 into Na Avogadro's number एतिटा इलेक्ट्रॉन अछि ताले 0.1 रे केते अछि ना 18 into Na into 0.1 that is equal to 1.8 into Na एतिटा अछि 1.8 into Na देखो तार आंसर भी देछि मु एतरा कोन अछि माने 1.8 moles of electron. आगे पता चले how many moles of electrons? Obviously, आगे बाहरला 1.8 moles of electrons. काहे कि ना गोटे मॉलिक्यूल रे जदी 18 इलेक्ट्रॉन थाए गोटे मोल रे 18 मोल इलेक्ट्रॉन रहबो 0.1 मोल हमर दिया छै 0.1 मोल रे so 0.1 into 18 moles 1.8 mole of electrons so kete ta electron now 1.8 into Na that is the number of electrons that is present तक गुणी देले अब एतिकी हबो 1.8 रे एवोगाड्रोस कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर देले एतिकी हबो ये बुझिला टेकेलो हेलो एंड वेलकम वेल गुड तीन नंबर ता देखो एटा सब मु लिभे देबी आज सेव करबिनी जोडा को मु एनोटेट करूची सो सोडा करो so try to take the best advantage of this and in the meanwhile I don't know सब कोचिंग सेंटर वाला सब जो मानु सब भलो भलो पिला मानु तम माने सब भलो पिला सब सब फ्री कर दो आप कोचिंग करिया पे सब घरे आसीबेडी सेते बेले होतला गुरु कोन होतला से रिजल्ट बाहरला परे बे तो आगुरु ये कलाडी सो एनीवे कोन देखि करी सब जो पूर्व रिकॉर्ड देखि करी कि कोन देखि करी आजकल तो आउ टॉप 100 बाहरुनी कि कोन होनी कोई पर ସେମାନେ ସବୁ କରିଦେବେଣି ତ ସେମାନଙ୍କର କୋଚିଂ ଓ କ୍ଲାसेस ସବୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବଣି ମାତି ଯାଅ ସେଥିରେ ଯଦି ଫ୍ରି ପାଉଛ ଭଲ ଯୋଉମାନେ ସ୍ୱୟଂ मेडिकल इंटरेस्टेड तार अछि आकाश इज वेरी गुड फॉर दैट मेडिकल ओरिएंटेड सो सेथरे जॉइन करि जाओ अन्य माने जदी जोटी पाउछ फ्री देखो if you can get the full satisfaction or else you consult with your parents to go for some individual coaches but never select an old person like I mean of my age who has already crossed the expiry date of teaching and if such people not like me I will definitely help you but even a person above 70 or above 65 they if you go there you have to run a risk don't know when such a teacher will become sick or might leave the body so you must select a place where there is continuous system like a coaching place or individual coach which will be maximum middle aged 50 55 60 at the most and carry on and I have already told you my door is always open for continuous system I can take but I am really eccentric I used to give lecture and I demand that the students who will be there with me are reciprocative very interactive and humble they should be prepared to digest the reprimand that the teacher is giving
scoldings that the teacher is giving. Must be prepared for that. Yes. Let us go to the third question. How the total, calculate the total charge in coulombs coulomb unit present in 50 millimoles of phosphite ion. I'll just acquaint with the milli system, because in advanced mole concept, millimoles is more useful in calculation than moles, because 0.001 mole, it should be 1 millimole. So if you multiply something with 1000, then it becomes milli. 1 kg is equal to 1000 gram. 1 gram is equal to 1000 milligram. 1 mole is equal to 1000 millimole. 1 millimole is equal to 10 to the power minus 3, or 1 by 1000 mole. So you can convert millimole to mole, mole to millimole easily. So ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ଯେ 50 millimole, of course, mole is applicable for everything, whether it is ion, in elementary ion like phosphide, carbide, nitride, that, or a composite or a polyatomic ion like sulfate ion. So mole is applicable, or a single atom. Mole is applicable for all. So 50 millimoles phosphide ion रे जो charge अच्छी electrical charge neutral हेला परे प्रति phosphide ion रे 3टा extra electron अच्छी. That gives the charge. The net charge of the ion is due to the extra 3 electrons each ion is having. So phosphorus गोटे atom रे एठी मु जानि कि annotate करछि गोटे atom गोटे ion phosphide ion रे गोटे phosphide ion रे अछि 3 electrons. 3 electrons. The charge is 3 electrons, minus 3, or 3 electrons. That is the net charge. तबे गोटे मोल रे अछि 3 into Na electrons. गोटे मोल होची 1000 मिलीमोल. ताले 1000 मिलीमोल रे अछि 3 into Na electrons. ताले 50 मिलीमोल्स रे अछि केते ना 3 into Na by 1000 into 50. तबने इटे गोटे शून्य कटिला by 2. नहीं by 2 goes by 20. ताला 3 by 20 into Na. एतिकिटा इलेक्ट्रॉन अछि. तार एक्चुअल चार्ज गोटे इलेक्ट्रॉन रो चार्ज जदी 1.602 into 10 to the minus 19 coulomb हुए ताले सेतिकी टोटल चार्ज होची q लिखि देली. So 3 by 20 into 6.0222 into 10 to the 23 into 1.602 10 to the minus 19 सेतिकी टोटल coulomb हबो. Are you able to follow me? Raise your hands. आउ गोटे मन रखि था गोटे फैराडे is equal to approximately equal to 96,500 coulomb. Sometimes you are asked to express the charge in Faraday. So जति coulomb रे बाहरला सेतरे 96,500 divide कर देले, you will express that charge. I'm not taking current, charge Q in Faraday unit. 1 Faraday is 96,500 coulomb. Same thing एटा भी करिवो exactly for calculate the total charge in coulomb. C stands for coulomb, present in 0.45 milligram. ताको मोल करियो पड़िबो. मिली होची 10 to the minus 3 ग्राम by aluminum होची 27. इलेक्ट्रॉन 3-4 टा नहीं गले तार मोलार मास ता चेंज होइनी. इलेक्ट्रॉन has negligible mass. by 27 रे डिवाइड करो into 10 to the minus 3 रे गुणो by 1000 रे हरो. That will give you the number of moles of aluminum ion. Each aluminum रे जदी 3 plus अछि 3 plus excess 3टा प्रोटॉन अछि तबे सेतिक जो मो भारला मोल जति भारला मोल सेतिक रे किबा मिली रे रही कंटिन्यू कर दियो मिली आउट 10 to the minus 3 रे मल्टीप्लाई करनी से मिली मोल रे कर दियो. सो 0.45 मिलीग्राम by 27 ग्राम पर मोल. सो ग्राम ग्राम कटि गेले मोल टा ऊपर उठिया मारले मिली मोल भारी गला. सो जदी गोटे एल्युमिनियम आयन रे जदी 3टा +3 चार्ज हुए
प्लस 3 यूनिट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन लिखि परिबनी प्रोटॉन लिखि पारि भल लागिबनी सो प्लस 3 यूनिट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज थाए गोटे गोटे मोल रे थाए प्लस 3 into Na यूनिट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज जति कि मोल भाई मिली तने 1000 मिली मोल रे सति कि अछि केते ना पॉजिटिव चार्ज which is 3 into Na number of unit charge गोटे मोल 1000 मिलीमोल रे ताले जति मिलीमोल बाहरला सेति करे केते यूनिट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज अछि गोटे यूनिट होची 1.602 10 to minus 19 सेम गोटे इलेक्ट्रॉन चार्ज जति कि गोटे यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज रो मध्ये यूनिट सेति प्रोटॉन रो चार्ज सेति सो यू कैन फाइंड आउट आल्सो द चार्ज टोटल चार्ज प्रेजेंट इन 0.45 मिलीग्राम ऑफ एल्युमिनियम आयन के बुझिलो परिबो देखो मु जस्ट डिस्कस कर दोची तुमको करियो को भल निजे कैलकुलेट करियो भल लागो द एटॉमिक masses of two elements A and B are 20 and 40 respectively x gram of A contains y atoms then how many atoms are present in 2x gram of B so जदि x ग्राम रे y atoms रहिला तले 20 ग्राम रे केते रहिला जति रहिला that is bound to be Avogadro's constant so जे थ्रू x टा भारी होला ये गुटी इक्वेशन हैला देखो यदि x ग्राम A contains y atoms तबे 20 यूज तार मोलर मास 20 ग्राम केते रहउची ना y by x into 20 and that is equal to Na सेमती एटा गुटी इक्वेशन हैला इन्वॉल्विंग y and x सेमती how many grams how many atoms are present in 2x gram of B so आमे जदि y रे एक्सप्रेस करिवा तबे एठी बाहर करि परिवा x टा केते x will be equal to 20y by Na तले 2x टा केते हबो ना 40y by Na एतिकी x टा होची मास तो एतिकी ग्राम ऑफ B रे B रो 40 ग्राम रे अछि Na B टा होची 40 तबे 40y by Na ग्राम रे हबो Na by 40 केते इंटरेस्टिंग Na by 40 into 40y by Na रे 40y by Na so Na कटि गला 40 कटि गला आंसर होची y टा atoms so 2x gram of B रे y टा केते नंबर एटा 5 नंबर देखिबा yes answer is y so this you will play with this माहुरी प्रॉब्लम देबी तुमको मजा लागि गले चलेबो के बुझिलो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन एटा को एनोटेट मु जोडा देइछि तो देइछि तेणु एटा मु एनोटेट करबिनी कि आउ ए फाइल टा पठेबिनी तुम निजे करो oxygen is present in a 1 liter flask at a pressure of एतिकी millimeter of mercury at 0 degree Celsius calculate the number of oxygen molecules in the flask well gas concept रो जतिकी दरकार मु 100% कहिनी एठी दरकार पड़िबो ओटे लिखि दियो जोटा हम देवांश बाबू कहउतले I don't know whether I have told you or not कहिछि ना कहिनी concept रे the ideal gas concept रे PV is equal to nRT that is a very important relationship P टा होची gas pressure कहिछि आज्ञा सर काली कहिथिले yes V होची वॉल्यूम ताको लीटर रे नबो P टाको एटमॉस्फेयर करिवो N टा हबो नंबर ऑफ मोल्स एटा गोटे संख्या R टा गैस कांस्टेंट तार वैल्यू तमे नबो 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल टेंपरेचर टा केल्विन टेंपरेचर इन केल्विन स्केल 273 युक्त सेल्सियस रे जति देथिबो
तो यही तुमे नंबर ऑफ मोल्स बाहर करदेले सब जिनस बाहर जीव मास को कन्वर्ट कर परिबो सब कर परिबो पीवी इक्वल टू एनआरटी आमे यूज करिया पड़िबो काइना एठी टेम्परेचर डेटा देइछि सेठी जो देवांश कहतले सेठी पीवी इक्वल टू एनआरटी यूज करि परिबो नै कि टेम्परेचर डेटा नै खाली रेशियो पचारछ अब बेटा कोन या सो ऑक्सीजन गोटे 1 लीटर फ्लास्क रे अछि प्रेशर एति की के कहि परिबो केमति पी पी टा केते होबो So 7.6 into 10 to the power minus 10 mm of Hg. नो केते होबो sir theta 1 into 10 to the minus 12. हां So 1 into 10 to the minus 12. 1 into केते जानि Man 10 sir कारण 1 atm होची 760 mmHg सेटा तो प्रेस ସେଇଟା କହୁନ ତମେ ତୁମ ଆମକୁ କାହିଁକି ଏତେ ମୂର୍ଖ ଭାବୁଛ ତମେ ବହୁତ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ଆମେ ତ ଏତେ ମୂର୍ଖ ନୁହେଁ ତମେ କହୁନ ଦିସ୍ ବାଇ 760 ତମେ ଜାଣିପାରୁଛ ମୁଁ ଏଇଆ ଆନ୍ସର ଚାହୁଁଛି ସବୁବେଳେ ଅନ୍ ଦି ଅଦର ହ୍ୟାଣ୍ଡ ତମେ ଆନ୍ସର କରୁ ହରିକିରି ଆନ୍ସର କରୁଛ ମୁଁ କେମିତି ତମ ଭଳିଆ ତ ମୁଁ ଏତେଟା ଏକ୍ସପର୍ଟ ନୁହେଁ ମନେ ମନେ ହରଣ କରିଦେଲେ ତମେ କହୁନ ଏତିକି ବାଇ 760 that would have pleased me more than by giving the final answer. So that is by 760 because এটা মিলিমিটার দেইছি তাকু আটমোস্ফিয়ার রে কনভার্ট করিয়া পড়িও মু কইছি পিভি ইকুয়াল টু এনআরটি বর্তমান পাই তমে প্রেসার টাকু মিলিমিটার দে যাহা দেইथिबो তাকু আটমোস্ফিয়ার রে কনভার্ট করিয়া পড়িও 760 होची गोटे আটমোস্ফিয়ার তখন এতিকি মিলিমিটার দেইছি তাকু 760 হলে এতিকি আটমোস্ফিয়ার বানা into v लीटर देइछि 1 is equal to n होच बाहर करिबा r होची 0.082 into टेम्परेचर होची 273 0 डिग्री सेल्सियस माने 273 तले एठू तमे बाहर कर दो n टा केते नंबर ऑफ मोल्स बाहर कर देले यू नो द नंबर टा सेतरे एवोगाड्रोस कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर देले नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स बाहर गला दैट into na कैपिटल na will give you बुझिलो के बुझिलो एटा Sir, देखो R टा कोन होचे हां सर R रो वैल्यू केते हबो 0.082 पूरा मैं कहली सेठी लिखली तमे देखि परलनी कि सेठी ओके सर एठी 0.082 ओके कि एंटा बाहरला एंटा होची नंबर ऑफ मोल्स सेथे Na मल्टीप्लाई कर देले बा एवोगाड्रोस कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर देले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से पचारिछि calculate the diameter of one atom of mercury assuming that each atom has a cubical shape actually spherical shape ଆମେ assume करू सब बेले किंतु एटा गोटे अंक पई कहिछि गोटे क्यूब छोटो एते टाइनी एटम टा so the cube and sphere they will have nearly same volume देखो धरो तमे cubical shape and the side of the cube is equal to the diameter of the mercury atom each atom has a cubical shape and the side of the cube is equal to the diameter of the mercury atom which is actually believed to be spherical तमे आगो क्यूब भाबिकरी साइड बाहर करियो then ताको actually spherical भाबिकरी 4/3 pi r cube but जति कोन देखिया express your answer in angstrom unit the density of mercury is this so density data जो देछि that is mass by volume so molar mass देछि 200 so 200 by molar volume was V is equal to 1.36 eta you know mercury is a liquid seti pai gas concept is applicable only for gases liquids and solids pai 22.4 liter has no meaning at all tar volume bahar kariyo molar volume kemti na density re sorry molar mass re density divide kale molar volume baharibo gote mole se solid ke liquid सेही कंडीशन रे एसटीपी कंडीशन हो जो कंडीशन से देछि सेतरे तार वॉल्यूम केते किबा मोलर हमें मोलर वॉल्यूम बाहर करिबा एते केते ताल मोलर वॉल्यूम केते बाहरला V इज इक्वल टू 200 बाय 13.6 सो गोटे मोल मर्क्यूरी रो वॉल्यूम केते
केते बाहरला सर 14.70 14.7 एतिकी कोन बाहरला व्हाट इज द यूनिट दैट इज एटा जेहेतु से सीसी रे देइची दैट इज सेंटीमीटर क्यूब पर मोल कारण भीटा गले भीटा पटु गले एटा एटिके आसला 200 टा होची मास ना वॉल्यूम mass by volume is equal to density. This is gram per cc. So CMQ टा diameter ला ऊपर CMQ by एटा होची ग्राम पर मोल 200 ग्राम पर मोल. So ग्राम कटि गला 13.6 ग्राम पर CMQ. ऐसे ग्राम कटि गला तो एटा रहला CMQ पर मोल. गोटे मोल रो आयतन होची एतिकी. गोटे मोल माने Na. सो Na एटम्स रो आयतन बा वॉल्यूम जदी 14.7 cm³ हैला ताले गोटे एटम रो आयतन केते बाहरला 14.72 14.7 by Na into by Na तो 14.7 by Na बुझी गोटे एटम रो आयतन ताकू क्यूब भाबिबो x क्यूब गोटे दर साइड हैला x क्यूब इज इक्वल टू एतिकी 14.7 by Na हेले ताले गोटे साइड क्यूब रो केते से साइड ता जदी प्रकृति रे डायमीटर हुए ताहले सेटा ही से पचार कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ एन एटम of mercury assuming that each atom has a cubical shape and the side of cube is equal to diameter of the mercury atom तमाने से साइड पचार सो x जो बाहरला क्यूब रूट नवाक पड़िबो जेतिकी हबो that is the side of the cube and which is equal to the diameter of the mercury atom taking to be again spherical ताकू सेटा सेंटीमीटर रे बाहरला सो धरो 1 सेंटीमीटर बाहरला हाउ टू कन्वर्ट इट टू एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम यूनिट रे प्रकाश करियो कहिछि हाउ टू कन्वर्ट इट टू एंगस्ट्रॉम सर 1 एंगस्ट्रॉम होची 10 to -8 सेंटीमीटर कोन करबी ए जो तो बाहरला मल्टीप्लाई केते धरो धरो p सेंटीमीटर बाहरला सो p रे कोन मल्टीप्लाई करबी 10 to the -8 10 to -8 ना 10 to +8 +8 ताले angstrom is a smaller unit 1 angstrom is equal to 10 to the -8 centimeter 1 centimeter is equal to 10 to the minus 1 centimeter is equal to 10 to the 8 plus 8 angstrom 1 angstrom is equal to 10 to the -8 centimeter so 10 to the 8 रे गुणिले नहीं 10 to the -8 सेंटीमीटर बाहरला ताको angstrom करिवो यस डेफिनेटली 10 to the power 8 रे बोलिबो प्लस 8 रे गुणिबो जदि एंगस्ट्रॉम था ताले 10 to the 8 रे हरि थांतो बा 10 to the -8 रे गुणी थांतो से गुणिले जति बाहरिबो सेति की एंगस्ट्रॉम बुझ परछो अरे बुझछो ना नहीं कि को माने बुझिला चेको Yes, sir. Yes. तो एमती सब गुडा को कर दे परिबो मुख देखुची मु कोन कहिची न कहिची देखो इट इज फाउंड दैट 11.2 liters of any gaseous compound of phosphorus at STP phosphorus रे गोटे gaseous compound like phosphine के diphosphine केते अछि there is never less than 15.5 gram per phosphorus 11.2 liters of any gaseous compound of phosphorus at STP in एतिकी रे there is never less than 80 gram of phosphorus आटो अधिका अछि किंतु कम नहीं 15.5 कि ताटो अधिका अछि also the volume of the vapor of phosphorus itself at STP weighs 62 gram से जो phosphine की जहां भी कहूची सेटा STP रे the volume of the vapor itself weighs जति की वॉल्यूम दिया जाय तुमको 11.2 liters तार weight हला बा तार मास हला 62 gram what should be the atomic mass and molar mass of phosphorus what is the molecular formula of phosphorus what should be the atomic mass and molar mass of phosphorus तुम भाबो
जदि 11.2 लिटर एसटीपी रे तार वस्तुत्व हला 62 ग्राम ताले 12.4 लिटर रे वस्तुत्व केते हो तार डबल 2 212 एतिक ग्राम हला मोलर मास ऑफ दैट कंपाउंड तर एतरे फॉस्फरस रो माने मासटा तार फॉर्मूला मिल हां कोन कहलो ମୁଁ କହୁଥିଲି କି ଏଥିରେ ଫସଫରସ ର ମାସଟା ହଟିଲେ ତାର ଫର୍ମୁଲା ମିଳିଯିବ। देखो जदि 11.2 लिटर रे मिनिमम 15.5 थाए तो माने हाफ मोल रे ताले गोटे मोल रे एटा ग्रेटर देन इक्वल टू 15.5 ग्राम ताले 22.4 रे मिनिमम केते रहइबो तार द्विगुणा 2.10 31 तो गोटे आमे जानिने एपर्यंत आमे एटॉमिक मास 31 आमे आगुरु जानिछे किंतु ए प्रॉब्लम कहूची तमे एटॉमिक मास ऑफ फास्फोरस तुम जानिनो तो सी गोटे मोल रे 31 ग्राम रु अधिका पछ रहइबो कम रहइबो मिनिमम 31 ग्राम रहइबो त माने यस सेटा कहिछि से सर से दिटा बाहरी गला पर तो मॉलिक्यूलर फार्मूला भी बाहर परियो कि केतेटा फास्फोरस रे 124 होची मिनिमम माने रहइबो माने this minimum should be the atomic mass of phosphorus तो जदि एटा हला ताहले एटॉमिसिटी बाहरला केते ना 124 by 31 बाय 31 4 गोटे क्वेश्चन रो डिफेक्ट अछि एटी जो कंपाउंड ऑफ फास्फोरस कहिछि नो गैसियस मॉलिक्यूल ऑफ फास्फोरस कंपाउंड माने हमें फॉस्फीन नहीं परिबा pH3 डाइफॉस्फीन p2h4 टेट्राफॉस्फीन p4h2 केते जिंस फास्फोरस रो कंपाउंड अछि व्हिच आर गैसियस तेणु एठी 11.2 liters of any gaseous compound of phosphorus that is not correct there is never 15.5 टा मिनिमम जदि हबो ताले गोटे मोल रे 31 टा मिनिमम माने गोटे फास्फोरस एटम सेटा then the atomic mass of phosphorus is 31 so जदि हमर मोलर मास बाहरला 124 then the atomicity is 4 the answer 8 रो 4 मु क्वेश्चन टा करेक्ट कर देबी तुमे मध्ये करेक्ट कर दबो केते नंबर टा yes 31 and 124 molar mass and the formula is 4 so এটা ভুল আছে এটি any compound में gaseous molecule of phosphorus it is an elementary molecule p4 is an elementary molecule like O2 S8 so compound এটা নুহে এটা বুঝিলো तो सेमती सबुडा करि परिबो इंटरेस्टिंग जिंस 10 टा पाइबो हेमोग्लोबिन तार मोलार मास देइछि एतिके 65000 ग्राम पर मोल hemoglobin contains एतिके परसेंट iron by mass how many iron atoms are there in hemoglobin molecule iron atomic mass is 56 hint दिया है mass percentage of iron is equal to mass of iron by total mass एटा हम जानिनु हमें जानिछु 35% जो मास अछि ताहले 100 ग्राम रे हेमोग्लोबिन रे मात्र 0.35 ग्राम अछि ये यदि 100 ग्राम रे 100 ग्राम हेमोग्लोबिन रे मात्र 0.35 ग्राम आयरन अछि ताहले 65000 मोलार मास रे केते अछि 0.31 by 100 into 65000 सेति ग्राम हिसाब कलो 0.31 by 100 into 65000 केते हो सर 0.31 कहीं हला 0.35 से एमती न कहि 0.35 कहूनो एटा सारा 0.35 हो केते बढ़िया लागि थाना से सेटा 0.35 हो तुमे मतो क्वेश्चन करछ से एटा 0.31 केमती हला
This is not a good way. You are a very sober boy. You are a very presentable boy. But take change कर देले आउरी भलो. You are smart. You are smart. ଆଉ ଟିକେ sobriety ଆସିବ. Sir ଏଟା 0.35 ହବ. ମୁଁ ଜାଣି ପାରିବ टीचर जे ଗୋଟେ slip of pen ହେଇଛି ଏଠି 0.35 ଥିଲା ଏଠି ଲେଖିଲା ବେଳକୁ 0.31 ଲେଖିଦେଲେ ତାକୁ କରେକ୍ସନ କରିଦେଲେ. ସେଟା 0.31 କାହିଁକି ହବ? ସେଟା 0.31 କେମିତି ହେଲା? अच्छा by 100 into ଏଟା କେତେ ହେଲା आंसर? सर 22.5 Sir, 227.5. ଆଉ ତମେ କହୁଛ ये 22 पॉइंट समथिंग कौच मिस पायोजा 0.35 by 100 into 65,000 केते बाहरला सर 227 करता 227 जदि गोटे मोल रे 227 ग्राम थाए Sir, 227.5. 227.5 27.5. ग्राम थाए ता माने सेटरे केते मोल अच्छी आयरन सो 227.5 by 56 होउस द आयरन एटॉमिक मास तो 56 हरिले केते मोल्स अच्छी गोटे मोल रे केते मोल अच्छी तने गोटे मॉलिक्यूल रे सेतिकिटा एटम रहइबो सो केते 56 रे हर केते बाहर Sir, 4.07 जोटा 4 होबो. एन अप्रोक्सीमेटली ताकू राउंड अप करिवो नियरेस्ट होल नंबर सो गोटे मोल हेमोग्लोबिन रे 4 मोल आयरन एटम्स अच्छी 56 रे हरिलो माने आयरन एटम्स तो गोटे मॉलिक्यूल रे 4टा एटम आंसर होची 4 सो एमती तमे सब करिवो गोडाक प्लस मु आउरी आजी देवी तुमको अधिका सो नहु पछे हमर सॉल्यूशन को आबे न जाऊ कि किछि न करू मोल कांसेप्ट स्ट्रांग हुआ मु देखली जे तमे जो माने यूरेनियम रो थिलो से माने मध्य सब पासरी गलनी तेणु okay that's all for today bye bye those who are watching or will be watching later on YouTube give a thumbs up if you have liked it consider for subscribing bye bye Thank you, sir. Right. Thank you, sir. सर Thank you, sir.